नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज़ और मेरा नाम है वर्तिक। और आज हमारे साथ है जॉन, जो कि यूएस से आए हैं और जो पूरे इंडिया का भ्रमण कर रहे हैं एक साइकिल पे। और इनको साइकिल पे ट्रैवल करते हुए 2 साल हो गए। तो आज हम इनसे बात करेंगे तो समझेंगे कि इनका उद्देश्य क्या है, इनका आगे का प्लान क्या है, ये क्यों ट्रैवल कर रहे हैं। सो जॉन, वेरी नाइस टू मीट यू। Very nice to या meet you. I would like to start with asking you what was the motivation. Like you told me you walked for 3 years Yes. and you're cycling for 2 years. So what was the motivation behind doing all these things? The motivation was to let go of the illusion of my life, to find a deeper understanding of truth and relationship with God. It ultimately started out by listening to the commands of Jesus Christ, but not Christianity, but just as Jesus spoke. He says to sell everything you own and give to those in need. If you wish to be great, to be less, to be a servant of all. So I knew there was more to life than what I was being told, especially in America. And so I let go of my understanding of life, my personal identity, and my security in material. And so I started walking. ऐसा कहना है कि ये जब अमेरिका में रह रहे थे तो वहाँ पे जब इन्होंने थोड़ा धर्म के बारे में, थोड़ा क्रिश्चियनिटी, जीसस से जब ये जुड़े तो इनको ये पता लगा कि जीवन में जो ये जीवन जी रहे, जैसे हम काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, उसके अलावा भी लाइफ में बहुत कुछ है। तो इन्होंने पहले चलना शुरू किया, फ्लोरिडा शहर जो यूएस में, वहाँ से टेक्सास तक। और फिर धीरे धीरे इन्होंने अपने बाइक ली और फिर ये पूरे इंडिया का भ्रमण कर रहे हैं तो दुनिया के बारे में और जानने की। बिट ब्रीफ because like translation. Yeah, I know Yeah. translation is difficult, but that's as brief as I know how to Yeah, get it, to no, get no. everything of why, Yeah. like to answer. I Yeah. don't know how, like, it's Yeah. but everything in my life is simple, but at the same time complicated, because there's so many pieces that Yeah. create the life that I walk. Yeah. तो इनका कहना है कि इनके और भी बहुत सारे रीजंस हैं बाहर जाने के। जैसे इन्होंने जो होमलेस लोग होते हैं, जो लोग सड़क पे सोते हैं, उनको देखा, उनकी मदद करी। तो इनके अंदर और भावना है कि और दुनिया में क्या क्या समस्या है उनके बारे में जानूं और जान के उसकी लोगों की हेल्प कर सकूं। ओके, सो मूविंग अहेड, कुड यू जस्ट टेल अस हाउ मच, विच पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू ट्रैवल्ड सो फार एंड व्हाट इज़ योर प्लान गोइंग अहेड? Okay. Yeah, I just got here, and so I came into Ahmedabad, Yeah. and I then rode to here. But I stayed 2 days in a village outside of Ahmedabad, and beautiful place, amazing mango. Yeah, the Kesar Kerry. Yeah. And beautiful people in the village that welcomed me in. I stayed for 2 days, Yeah. and then I rode here. I actually got in last night at about 4 in the morning. I rode all through the night, Yeah. and I plan to go to Rishikesh Yeah. and Varanasi. And in between, obviously, there's a lot of distance, so I go as the spirit leads. तो ये पहले अहमदाबाद आए थे, अहमदाबाद के एक गांव में कुछ दिन रुके, फिर उसके बाद यहाँ आए हैं। और इनका आगे का प्लान ये है कि ये वाराणसी और उसके बाद ऋषिकेश जाएंगे, क्योंकि उसको वहाँ पे जो भी धार्मिक चीज़ें उनको सीखने का इनके मन में इच्छा है, इसलिए वो आगे ऋषिकेश। जस्ट टेल अस लाइक इन नॉर्मल डे हाउ मच डू यू ट्रैवल एंड what kind of problems do you face generally in India? And you could also tell us, like, if you travel other countries, how is India different from that? Okay. Usually 80 to 120 kilometers Yeah. is my daily distance. Troubles in India with the rainy season have been really mud, getting thick, deep muds, getting stuck, and then mechanicals on the bike, but no difficulties with people. And as I choose to live my life the way I do, not serving money, I sometimes go without food for a day, 2 days, because I choose not to serve the system of money, but to receive as it's given, but not to ask to take. एक दिन में लगभग 80 से 90 किलोमीटर अपनी साइकिल पे ट्रैवल करते हैं। और इंडिया में इनका ये कहना है कि बारिश के कारण थोड़ा रोड पे जैसे मिट्टी होना, कीचड़ होना, ये सब प्रॉब्लम आई है। पर इंडिया के लोग फिर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। ये कई बार ऐसा भी हुआ है कि ये बिना खाने के भी सोए हैं, लेकिन इनको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सब छोड़ के आए हैं। तो ये खाना, इनको सिर्फ लोगों से मिलना है, लोगों को देखना है, इनका ये उद्देश्य। सो आई वांट टू आस्क यू, लाइक, थ्रू दिस जर्नी दैट यू आर डूइंग इन अ साइकिल,
what is the message that you want to give to people? And also, what are the plans ahead? Like, for how many years you want to continue this? Do you want to visit other countries apart from India? What is the plan ahead? Yes, I hope to visit every country that's on this planet. Oh. And I have no plan of finishing. I receive whatever the Spirit leads. And a message that I would wish to give to all people is love, is connection and unity with all people, all life forms, to come together and unite as one. तो इनका कहना है कि ये कुछ भी सोच के निकले ही नहीं है कि मैं इतने साल घूमूंगा या इतने दिन बाद घर वापस चला जाऊंगा. मेरा बस एक ही पर्पस है कि लोगों में प्यार फैलाना, लोगों से कनेक्ट करना, और लोगों को मैसेज भी यही है कि एक दूसरे से प्यार करो, और जो भी इंसानों से नहीं, प्रकृति से भी, जीवों से भी, आपस में एक दूसरे से भी साथ मिलकर रहना और कनेक्ट करना. इनका कोई पर्पस ये नहीं है कि इतने दिन में वापस चला जाऊँ. व्हाई डू यू थिंक इंडिया इन पर्टिकुलर इज special for what you're doing? In India, there is a respect for those that seek the divine, that are not misguided by the illusion, and versus other places in the world are so blinded that if you are not seeking that same thing, you are rejected, you are cast out, and they don't help your journey to God. तो इनका ऐसा कहना है कि जैसे ये पैसा कमाने को छोड़कर जैसे सीकिंग द डिवाइन, मतलब ये जो भगवान को ढूंढ रहे हैं या भगवान के रास्ते पे चल रहे हैं, तो इनको इंडिया में बहुत सम्मान मिलता है ये चीज़ करने के लिए, लेकिन ये सेम चीज़ करने के लिए इनको दूसरे देशों में सम्मान नहीं मिलता है, क्योंकि वो यूँ कहते हैं कि तुम पैसों को छोड़ के ये सब क्यों कर रहे हो. लेकिन इंडिया इनके लिए स्पेशली, क्योंकि इंडिया में इस पद का एक सम्मान है. तो मैडम, आपका कॉन्टैक्ट ये जॉन जो भी इंडिया है उनसे कैसे हुआ था? सबसे पहले 15 डेज़ पहले मेरा बेटा दिव्यम जो लंदन में अभी स्टडी कर रहा है, MBA कर रहा है, उनसे इनका मिलना हुआ और इन्होंने बताया कि मैं इंडिया ट्रिप पर जा रहा हूँ. तो इन्होंने रोड मैपिंग दिखाई कि राजस्थान भी, अहमदाबाद से बांसवाड़ा होते हुए ऋषिकेश. तो उससे बताया जब बांसवाड़ा जा रहे हो तो गढ़ी रास्ते में आ रहा है और हमारा फार्म हाउस है, तो आप ज़रूर जाइएगा. इन्होंने नंबर सेव कर लिया और बराबर कॉन्टैक्ट में रहे. जब ये आए, कल मोड़सा थे, तो इन्होंने कहा कि मैं आना चाह रहा हूँ, कितना दूर है यहाँ से. तो हमने कहा कि कल योगा डे है तो आप अर्ली मॉर्निंग आ जाइए. तो पूरे नाइट इन्होंने सफ़र किया और अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे यहाँ आए. तो हमको भी बहुत खुशी हुई कि इनका कितना एक बड़प्पन है कि ये पूरे भारतवर्ष की यात्रा कर रहे हैं और सिंगल साइकिल पर न, जो जबकि हम किस रोड मैप पे हम भी देखते हैं, गूगल पर जाते हैं, सर्च करते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में साइकिल पर आना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए. और हमें बहुत खुशी है कि एक विदेशी नागरिक होते हुए भी ये भारत का भ्रमण करके और सब कुछ देखना चाहते हैं. थैंक यू. Jai Shri Ram to all the viewers. Baswara News 24. तो हाँ, तो ये वही साइकिल है जिससे ये पूरे इंडिया का भ्रमण करें. जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पे बॉटल, टेंट और जो भी ज़रूरत का सामान है सब इस पे लगा हुआ है. और सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये कोई पैसा लेके नहीं निकले, ना इनके पास कोई ATM है, ना कोई बैंक अकाउंट है, ना ही या इंडिया की या इनके कंट्री US की गवर्नमेंट ने इनको कोई सपोर्ट दिया है. तो बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी फाइनेंशियल रिसोर्सेज के निकल चुके खाली ये साइकिल और अपना सामान लेके, और ये बस पूरे इंडिया और पूरी दुनिया का चक्कर लगाना इनका एकमात्र मकसद है. इंटरव्यू का उद्देश्य यही था कि हमको समझना था कि ये साइकिल से इतना ट्रैवल क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे इनका उद्देश्य क्या है और इंडिया के बारे में इन्होंने क्या क्या सीखा. तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी इससे कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.